Hello everyone, welcome to Creative Taanushree channel. Today we will see DVARP function in Calci. आज हम देखेंगे DVARP function Calci में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. DVARP function calculates the population variation based on numeric values in the cell of a specific columns for all rows that matches the specific search criteria. ये क्या करता है? पॉपुलेशन वेरिएशन को कैलकुलेट करता है ये कॉलम के सभी रोज के एक पर्टिकुलर कॉलम के और उसका आउटपुट वो देता है. तो द सिंटैक्स ऑफ DVARP फंक्शन इज दिस DVARP, then database, after that database field, and then search criteria. So let us take an example. Equals to DVARP population, उसके बाद database. This is our database. Data field is distance. And then search criteria is so result is 171,666.67. Thanks for watching. Bye.